Good evening, all of you. How are you all? Chabai, hey Chabai, कैसन बा? भाई ने क्यों नहीं बोला धवल ने फोन करके पूछे बीमार लेक्चर में तो फोन लगा ना सियांती वाला प्रेम वाला मैंने क्यों नहीं बात करी हाँ सूचे पूरा भाई चलो रेडी सब लोग चलो last lecture what we have started studying about the median bro. And with respect to what a median we have studied the formula but with respect to raw data, right? So with respect to raw data, we have completed case 1. We have completed, bro, with the case 1, bro. And now we are proceeding, bro, with the case number 2, bro. Case number 2, bro. So, write down with case number 2, when case number 2, write down, bro, when n is E1, bro. When n is, bro, E1, bro. When n is E1, bro. E1 means, bro, when the number of observations, bro, when they are equal to what, 4, 6, 8, 10, 12, then they are considered to be as what, even. Then they are considered to be as what, even. Bro. And now don't write anything. सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो. When n is considered to be as what, even, when bro, n is considered to be as even, bro, so in that case, when in that case there are two middle values. In that case, there are two middle values, and that two middle values are one is n upon 2 valued, one is n upon 2 valued, and other is n upon 2 plus 1 valued. You can see this. There are two middle values. One is
n upon 2 valued. One is n upon 2 valued, and other it is called to be as n upon 2 plus 1 value. So in that case, when we are supposed to find median, when we are supposed to find median, in that case, what is median? What is median? Median is considered to be as the average. Median is considered to be as the average. Median is considered to be as the average of two middle values. Median is considered to be as the average of the two middle values. Average of two middle values. So in that case, when we consider the average of the two middle values, then that median is given by the formula for median is given by median is equal to median is equal to the average of two middle values, that is n upon 2 value plus n by 2 plus 1 value, n by 2 plus 1 value whole divided by 2. Since it is the average of the two middle values, therefore median is given by n upon 2 value plus n upon 2 plus 1 value divided by 2 divided by 2. That means that means that means suppose if the number of observations they are 8. So in that case there will be two middle values. One, it will be 8 upon 2 and other will be 8 upon 2 plus 1. 8 upon 2 means it will be the fourth value. 8 upon 2 plus 1 means it will be the fifth value. तो मीडियन जो है बड़ा सब लोग सुनो ध्यान से मीडियन जो है वो 4 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2 यानी बड़ा आंसर 4.5 नहीं होगा दैट इज बड़ा रॉन्ग ऐसा नहीं हो सकता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस मीडियन जो होगा बड़ा इट विल बी द एवरेज ऑफ फोर्थ वैल्यू एंड द फिफ्थ वैल्यू whatever will be your fourth value and fifth value उसका एवरेज निकाल के जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर. अब तुम लोग मुझे बताओ कि सपोज इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस if they are equal to 12. अब मुझे ये बताओ कि with respect to 12 observations 12 which is even. तो मुझे बताओ with respect to even observations there will be how many middle values. चलो फटाफट मैसेज करो फटाफट. और मुझे बताओ which will be that two middle values. Correct, but one will be the sixth value and other one will be the
7th वैल्यू करेक्ट। तो सबसे पहले बड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन द गिवन सम which is my 6th value and which is my 7th value, and by knowing that which is the 6th and 7th value, I will able to find the median. The average of 6th value and the 7th value will give you the final answer। अच्छा, यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है बड़ा कि मीडियन जो है बड़ा दैट विल बिकम 6 + 7 13, 13 divided by 2, the answer is 6.5। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बेटा किसी को आंसर? चलो वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, चलो वेरी गुड, चलो परफेक्ट है बेटा, नाइस। एंड नाउ विद रिस्पेक्ट टू रॉ डेटा द फॉर्मूलाज गेट्स ओवर। पर मुझे ये बताओ कि व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ डेटा, तो बताओ सबसे पहले क्या करेगा? मैं देख रहा हूँ अभी शंकर तू आंसर नहीं बोल रहा है। अभी अभी शंकर तू आंसर नहीं बोल रहा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। You will have to arrange the given data in an ascending order, है ना? ऐसा तो कोई भी चल सकता है ना? But out of which beta we will prefer beta which form? We will prefer beta which form? Ascending form। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चलो बेटा परफेक्ट। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट। After beta completing this given formula, ये देख we'll start beta with the second type of data. In margin beta you will write down B, and in that B beta we'll write down frequency distribution data, frequency distribution data। चलो मुझे बताओ बेटा, frequency distribution data, it is classified beta into how many types? It is beta classified into two types beta। Number one is beta ungrouped data with frequency, and beta second one is called to be as the group data। In that, write down number one to be as beta। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट, कहीं भी
कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट to be as तैयारी का well. साथी। Ungroup data with frequency group. Ungroup data with frequency group. And मुझे बताओ बेटा कि ungroup data with frequency group is also called to be as ungroup data with frequency group is also called to be as correct, but very good. It is called to be as a discrete data. It is called to be as a discrete data. और सब लोग बड़ा पेन नीचे रख दो और सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो कि for ungroup data with frequency for ungroup data with frequency there does not exist any formula. There does not exist any formula. There is no formula but for finding a median with respect to ungroup data with frequency. There is a procedure, and by using that procedure only we can find a median with respect to ungroup data with frequency. So in that case, let me start with this as a god. In the given sum with respect to ungroup data with frequency, you will be provided with the values of x, and you will be provided with the values of f. And now see here. Suppose you are been known with the age of the students, which has been taken to be as x, number of students, which has been considered to be as f, and the values of x are given to be as 16, 17, 18, 19. Values are given to be as 7, 8, 4, 6. And there comes your total. Total of this, it comes to 25. समझा सबको? Total it comes to 25. And सब लोग बड़ा बराबर ध्यान से सुनो. For finding a median, you will require a special type of frequency, and that special type of frequency is called to be as a cumulative frequency, which is of less than type, which is of less than type. So here in this case, the last column, it will be for CF. It will be for CF, which is of less than type.
अब मुझे ये बताओ बेटा कि व्हेन वी फाइंड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ऑफ बेटा लेस देन टाइप, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट इज? फटाफट मुझे रिप्लाई करो, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप? मैसेज करो बेटा फटाफट। मैंने क्या प्रोसीजर तुम लोग को एक्सप्लेन किया था मैडम? We obtain a cumulative frequency which is of less than type by adding all the frequencies from top to bottom. So in that case, the answer comes to here 7, 7 plus 8, 15, 15 plus 4, 19, 19 plus 6, 25. Check karo. Here you can see that the value of total of frequency and the last value it matches, and since it matches, therefore the answer is correct. Therefore the answer is correct. And now when you will start with the working, when you will start with the working, in that working, in that working ये देखो, what you will do, सब लोग देखो what you will do, मैं ये erase कर रहा हूँ यहाँ पे, you will start with the working of position locator, position locator, and that position locator is n by 2, capital N, it is the total of frequency, and you will get the answer to be as 25 by 2. The answer is 12.5. अब सब लोग एक पॉइंट नोट करो कि n by 2 जो है ये कोई फॉर्मूला नहीं है। n by 2 जो है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ पोजीशन लोकेटर। ये तुम लोग को सिर्फ हेल्प करेगा कि ये मीडियन एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट हुआ है। तो अब तुम्हें करना क्या है कि यही 12.5 वैल्यू लेके तुम्हें जाना है CF के पास, एंड CF में जाके तुम्हें चेक करना है सेम वैल्यू, सेम वैल्यू 12.5। अगर मिला तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिला तो यू विल हैव टू गो with the just greater value of 12.5। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अभी अभी हम लोग ने जो टेबल कंप्लीट किया था, देखो तुम्हारे सामने आएगा स्क्रीन के ऊपर, ये देखो स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब CF में जाके मुझे चेक करना है 12.5। सबसे पहले मुझे फटाफट ये करो और मुझे आंसर बताओ कि क्या मुझे वहां पे ये वैल्यू मिला है ये वैल्यू मुझे मिला है 12.5। मैसेज करो मुझे फटाफट, 12.5 वैल्यू वहां पे है। नहीं है अब नहीं है, तो मुझे कौन सा वैल्यू लेना होगा? जस्ट ग्रेटर वैल्यू बराबर। तो जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन है? 15, करेक्ट। तब यहाँ पे तुम लोग सब लोग डांस करना चालू मत कर देना, सर 15 इज द फाइनल आंसर, 15 इज द फाइनल आंसर। नो 15 इज नॉट द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 15 it corresponds to which value of a variate? 15 it corresponds to which value of a variate? देख के बोलो स्क्रीन में से फटाफट।
15 beta. Correct. It corresponds to beta 17. So here in this case beta, जो median है beta, median is 17 beta. Median जो है बड़ा, it is 17 beta. समझा बड़ा सब लोग को? मैं क्या बोला सबको समझा? ये मीडियन मैंने कैसे फाइंड किया बड़ा? ये मीडियन फाइंड करने का मैंने तुम लोग को बड़ा यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया बड़ा, प्रोसीजर। चलो बड़ा, तो नाउ सबसे पहले एक काम करो बड़ा, और अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी जहाँ पे तुम लोग ने लिखा है ना, वहां पे 4 लाइन पहले छोड़ दो। 4 लाइन बड़ा पहले छोड़ दो वहां पे, और वहां पे लिखो बड़ा एग्जाम्पल। वहां पे लिखो बड़ा एग्जाम्पल। और ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया है बेटा, पूरा का पूरा कॉपी कर डालो फटाफट। ये टेबल बेटा पूरा का पूरा कॉपी कर डालो। 4 लाइन बेटा, 4 लाइन्स छोड़ने के बाद। चलो बेटा, टेबल कॉपी कर लिया पूरा। सिस्टमेटिकली बेटा टेबल ड्रॉ करो। हो गया बेटा टेबल ड्रॉ? मैसेज करो। कंप्लीट कर दिया टेबल। और उसके बाद फिर मैंने तुम लोग को जो उसका मैंने वर्किंग बताया था बेटा, वो करो। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, उसका मैंने वर्किंग बताया था बेटा, वो करो वर्किंग। दैट इज राइट बेटा, n/2 which is equal to बेटा 25/2 which is equal to बेटा 12.5। फिर ये 12.5 लेके बेटा हम लोग कहाँ पे गए थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास। तो 12.5 तो नहीं मिला बेटा, बट 12.5 का जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिल गया था। 15, बट 15 भी बेटा फाइनल आंसर नहीं था। हम लोग ने चेक किया था बेटा कि 15 करस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू ऑफ अ वेरिएट? 15 corresponds to which value of a variate? 17 below. Therefore below, 17 below is the final answer below. 17 below is the final
आंसर उड़ो। चलो बेटा रेडी हो सब लोग उड़ो। एंड नाउ बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, जहाँ पे तुम लोग को मैंने 3-4 लाइंस छोड़ने के लिए कहा था बेटा, यहीं पे आ जाओ। जहाँ पे मैंने बेटा 4 लाइंस छोड़ने के लिए कहा था वहां पे आ जाओ और वहां पे लिखो बेटा, मीडियन is defined to be as median is defined to be as that value of a variable median is defined to be as that value